Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. Yes, Sanjeev ji will discuss about that. So I guess my screen is looking small, right? If you all can confirm. I guess my video is looking bigger, but my screen is looking extremely small today, right? I think there is some, we are able to see your screen, but my screen is slightly small screen, right? So I'll do one thing. I'll maybe let me try maximizing the screen. Okay, are you all able to see my screen now? If you all can let me know in the chat box. I hope मेरा screen अभी दिख रहा है. So I need to cut down my camera today so that you all can see my screen. Yeah, this is better, right? So I don't know, maybe there is some change. But nevertheless, you all can just listen to me and maybe just see my screen. So we'll do the webinar like that today. Okay. Okay, perfect, great. So let us start off with the mid-market session. So before I start, a quick disclaimer. So beware of impersonation scams, guys. I know we've been discussing this a lot. So there are some fake individuals, WhatsApp groups, and there are websites that are misusing SBI Securities brand name. So they are luring people with some guaranteed returns or some free services, some tip service. So don't fall for those schemes, or no, don't give any personal information to these fake individuals who are disguising in the name of SBI Securities. So this is the official WhatsApp handle. Solely look for verified sources. Don't go for non-verified sources. Please check for the blue tick mark for the authentication. And stay vigilant. Don't give any information easily to anyone out there, and look for communications only from SBI Securities. And if you come across any of such fake individuals or someone disguising SBI Securities, then please contact our official help desk at 68545555. So beware of this. So don't fall for any of such for these fake impersonation scams, guys. Okay, now let us start off with an update on the global markets first. So if we look at how the US markets performed on Friday, so Dow Jones closed around 0.65% lower. S&P 500 was down 0.05%, while the Nasdaq was the only index that closed in the positive. So Nasdaq was up around 0.13%. If you look at the Dow futures, so Dow futures is up 0.08%. It is indicating a slight positive start to the US markets today. If we look at the European markets, Germany was down 0.7%, London was down 1.1%, France was down 0.76%. So all the three European markets were in the red, barring Eurostox 50 that was marginally up 0.02%. If we look at how the Asian markets are performing, so Nikkei, if we see Nikkei is down 0.10%, Hang Seng is down around 1%, Shanghai Composite is down 0.48%, whereas Kospi is the best performing Asian market index, which is up around 2%. Whereas if we look at our markets, Nifty is relatively flat since the market opened today. We are still yet to cross the 26,000 mark. We are at 25,980. We are just up around 0.27%, whereas Sensex is up around 0.32% here. So our markets today, they have been relatively flat. So Friday we saw towards the last 30 minutes, there was a sharp surge. I think the markets also got a sentiment boost in with respect to NDA gaining a thumping victory in the Bihar elections.
So that aided the sentiment, in Friday's session. But overall today, if we see that both Nifty and Sensex are relatively trading flat. If we see how the major indices have performed in the last 1 month, so Kospi has been the best performing index, which is up around 12.5%. Nikkei is followed by Nikkei, which is up around 7.5%. So Nifty has been doing well in the last 1 month or so. It is up around 3.6%. Whereas if we look at S&P 500, S&P 500 is down, or is just marginally up around 1%, followed by Nasdaq, which is up 1%. So last 1 month has not been that great for the US markets. One of the reasons could be for the fact that the inflation concerns are still persisting in the US markets, and maybe the Federal Reserve might not go for rate cuts in the December meet. So this is probably one of the reasons why the US markets, post hitting the record highs, have relatively not been doing well in the last 1 month or so. Shanghai in the last 1 month is up around 2%. Hang Seng is up around 2%. So barring Kospi and Nikkei, I think all the other markets have been in the range of 1 to 2%. If we look at the key macro indicators, if we look at the dollar index, so dollar index यहाँ पे 200 डे EMA से रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया था अराउंड 100 के आसपास, और वहां से थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट नजर आई यहाँ पे. And right now it's at around 98.38. So the immediate resistance for dollar index is at 100.3 to 100.5. So any move above 100.5, can lead to dollar strengthening against the basket of 6 major currencies. While on the downside, 98.5 एक strong support के तौर पर काम करेगा. Secondly, if we look at the US government bonds 10-year yields, so the yields have been slightly inching up higher. It's at 4.13%, still below the 200-day EMA of 4.2%. So if yields go up, let's say towards 4.2, 4.3, that could put pressure on the US markets as well as the markets across the globe. While any move below 4% or any move below 4 to 3.9% can be a big positive for emerging markets like us. If we look at India VIX, so India VIX again has been consolidating. If we see from the start of November, 13 to 13.5 is a strong resistance area. While on the downside, 10.5 to 11 is a strong support area. So no signs of any panic or fear as far as the India VIX is concerned. I think if we move about 12.9, 13, there are no any strong negative triggers in the markets currently. So India VIX more or less has been trading in a range, but any move above 13 can give some discomfort to the bulls, as higher volatility leads to bulls panicking and maybe exiting their positions. But if you look at dollar by rupee, so dollar by rupee again, it's trading near its resistance area. So somewhere around 88.8 to 88.7 is where dollar by rupee is. So dollar again is gaining strength against the rupee, which is not a good sign for our markets. So immediate resistance is around 89. Any move above 89 is only going to keep the FIIs away from our markets. Because if dollar strengthens against the rupee, FIIs lose money on their investments. So FIIs only gain when rupee strengthens, and only when rupee strengthens and it picks a trend, that is when we can see FIIs coming back to our markets. On the downside, 88.3 is a strong support. Any breach below 88.3 can be a positive for our markets here. If we look at crude oil, so crude oil has been taking resistance from its 50-day EMA. यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया था. एक हमने 24 अक्टूबर को देखा था, ऑलमोस्ट $66.06 अ बैरल का हाई था. यहाँ पे भी हाल ही में 11 नवंबर को ऑलमोस्ट $65 अ बैरल का हाई था. So again, the $65-66 a barrel mark is likely to act as a strong resistance for crude oil. While on the downside, I feel any move below $59-60 a barrel, that is where the support is. So any move below $59-60 a barrel, can lead to crude oil prices going down. Again, that can be a big positive for our markets, especially
since we import oil. इफ यू लुक एट सिल्वर, सो सिल्वर में पिछले 2 दिन से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है. सो सिल्वर ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से 54 लेवल्स, $54 एन आउंस लेवल्स टच कर दिया था. एंड वहां से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है. सो एनी मूव अबाउ 54, द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव फॉर सिल्वर. बट धनतेरस के बाद ही हमने देखा था कि सिल्वर में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ से एक रिकवरी आई थी फिर से. बट फिर से $54 एन आउंस के आसपास एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया सिल्वर, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला. सो एनी मूव अबाउ 54 अगेन इज लाइकली टू बी पॉजिटिव, while on the downside, the $47-48 an ounce is likely to act as a strong support area. If we look at gold, अगर हम gold की बात करें, so gold has post making the high of nearly $4,380 an ounce, वहां से एक profit booking नजर आई. बट गोल्ड इतना स्ट्रांगली आउट परफॉर्म नहीं किया जितना सिल्वर ने किया है. अगर आप सिल्वर देखोगे तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाके वहां से नीचे आया, वेयर एज गोल्ड इज येट टू कम नियर इट्स ऑल टाइम हाई, और वहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी. Having said that, even the trend for gold is bullish. I think any move above $4,250 an ounce can lead to gold prices moving up higher again. If we look at the FII positioning now, so on Friday, FIIs फिर से और एक दिन they sold in the cash market. काफी बड़ा फिगर था, अराउंड 4,968 crores का सेल फिगर आया था फ्राइडे के सेशन में. और हम देखते आ रहे कि लगातार पिछले हफ्ते देखे तो पूरे 5 दिन FIIs ने सेल किए हुए, और काफी बड़े फिगर्स है. 10 नवंबर को अराउंड 4,000 crores, फिर 14 नवंबर को तकरीबन 5,000 करोड़ का सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला था. और हाल ही में 2 दिन एक 800 करोड़ 380 करोड़ का सेलिंग था, और फिर से मिड वीक में एक 1750 करोड़ का सेलिंग नजर आई थी FIIs की तरफ से. So FIIs का sentiment is clearly bearish. No signs of FIIs returning to our markets. If we look at the net index futures contracts, that has also gone up from minus 1,59,000. It has gone to minus 1,69,000. So that is on account of short positions being built up by the FIIs. और हम ये भी देख सकते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हैज बीन गोइंग डाउन. सो फ्रॉम 19 इट हैज गॉन टू 15, फ्रॉम 15 इट हैज गॉन टू 12, फ्रॉम 12 इट हैज कम टू 11.18% नाउ. So 11.18% means अभी FIIs hold around only 11% long positions, whereas roughly अभी भी 89% short positions FIIs के पास है index futures में. So clearly, FII, so we've had a lot of positive news, whether it's the BR elections outcome, whether it's the GST cut, or, whether it's the Q2 earnings have been more or less very good quarter. I think a lot of companies have reported good set of numbers. But despite that, FIIs are yet to turn bullish on our markets. They are still holding relatively or in fact, I would say more shorts as compared to long positions in the index futures here. Now, if we look at how our indices are performing, अगर हम निफ्टी की बात करें, so निफ्टी अगर यहाँ पे हमने देखा था 7 नवंबर को 50 डे EMA तक आया था, ऑलमोस्ट 25,300 25,330 के एरिया पे, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली निफ्टी में. ये 50 डे EMA के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था. जब अगर आप 30 जून का हाइस को अगर आप कनेक्ट करोगे, और 18 सितंबर का हाइस को अगर आप ये कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ वही लेवल एक 50 डे EMA भी था, और वही से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई. बीच में 2-3 दिन एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था. अगर आप पिछले मिड वीक देखोगे 12, 13, 14 नवंबर को Nifty was almost consolidating in a range. The sharp bullish candle एक last 30 minutes में एक surge आया था फ्राइडे को, जिसके वजह से एक strong bullish candle बनी. और आज एक relatively हम start of the session देखेंगे तो relatively एक we were flat, और अब धीरे धीरे निफ्टी 26,000 मार्क के वहां पे चलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे. And I feel the intraday trend is again positive. Nifty is inching up higher slowly.
Abhi just recently it has crossed the day's high, which was at around 25,980. Nifty is at 25,986. So I feel if it is able to hold about 25,980, Nifty can move up higher. I think it can move towards 26,000, 26,020 levels on an intraday basis. एंड अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हो सकता है आज हमें 26,000 के ऊपर ही क्लोज मिले. दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग फॉर निफ्टी, because 26,000 again is a psychological level for Nifty. Or on the downside, immediate support will be this zone of around 25,915, 25,920. हमने देखा था आज का इंट्राडे लो अराउंड 11:30 के आसपास एक 25,915 का लो बना था. आई फील दिस लेवल मॉर्निंग के सेशन में भी अराउंड 25,906 का लो बन के एक रिकवरी आई थी. सो आई फील दिस 25,905, 25,915 जो कि डेज लो है, that level is likely to act as a strong support for Nifty. So I don't see Nifty going down significantly. I feel Nifty can either maybe close the day flat. It might trade in a range, or it can inch up higher. So not a market to be going shorts here. So overall the view is positive for Nifty. If we look at Sensex, so even Sensex has been going up. So Sensex भी हमने देखा था कि 7 नवंबर को ऑलमोस्ट 50 डे ये में से एक सपोर्ट लिया था सेंसेक्स ने, और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिली. Every day if we see Sensex has been making a fresh high. So if we see on 10th November, 11th, 12th, 17, we can see that Sensex has been making fresh highs here, which is a positive sign. And I feel the overall trend is positive for Sensex. The previous high, which was made on 23rd of October, that is 85,290, 85,300. That is a key resistance zone for Sensex. I think this will be an immediate resistance point. So any move above 85,300 can lead to Sensex moving towards 85,500, followed by 86,000. And on the downside, this 20-day EMA, which is at around 83,800, 83,850, that zone is likely to act as a strong support area for Sensex here. Now, if we look at the 5 minutes chart for Sensex, so even Sensex is also inching up higher. We can see some momentum picking pace in the last 20-25 minutes or so. So the immediate support zone purely on an intraday basis for Sensex will be around 84,600, 84,650. While on the upside, I feel Sensex can move towards, right now it's at 84,876. And if the current move sustains, then I feel Sensex can at least move towards 85,000 levels on an intraday basis here. If you look at Bank Nifty, so Bank Nifty has given a fresh breakout. It has hit a fresh all-time high again. ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और सेंसेक्स को. बैंक निफ्टी हमने देखा था कि पिछले 4 हफ्ते से एक साइडवेज जोन में ट्रेड हो रहा था. सो अगर हम देखेंगे 23 अक्टूबर को एक 58,577 का हाई था, और 30 नवंबर को अराउंड 58,615 का हाई था. सो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो 58,500, 58,600 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था बैंक निफ्टी के लिए, और आज अब एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में. सो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाया था, और फिर पिछले 1 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी करंट लेवल से और ऊपर जा सकता है. पीएसयू बैंक्स काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे थे. आज के सेशन में हम ये भी देख रहे हैं कि इवन प्राइवेट बैंक्स में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है. तो अगर हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखें, सो बैंक निफ्टी अगेन इज मूविंग अप. इट हैज जस्ट क्रॉस द डेज हाई. अगर हम डे हाई देखेंगे तो 58,979 है, और अभी बैंक निफ्टी जस्ट 58,984 एक फ्रेश इंट्राडे हाई बना है. सो इवन द ट्रेंड लुक्स पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी ऑन एन इंट्राडे बेसिस.
डाउन साइड की बात करें तो 58,850 58,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा इंट्राडे बेसिस पे। और ऊपर की तरफ आई थिंक बैंक निफ्टी कैन लाइकली मूव हायर, इट्स एट 58,975। अगर आई थिंक 59,000 is not very far away, and if the current move sustains, then high chances are that we can get a strong close above the 59,000 mark today. If we look at the heat map, so अगर हम heat map की बात करें तो जो major heavyweights है जैसे HDFC Bank और ICICI Bank, that is up around 0.42%, 0.5%. Bharti Airtel भी 0.84% ऊपर है. Infi is relatively flat, it's down 0.07%, whereas Reliance is down 0.3%. So heavyweight support है, there is good support from the private banking space. अगर आप Axis Bank देखोगे, that is up around 7-8%, 0.78%, and Kotak is also up around 1.2%. The SBI is up 0.59%, SBI Life is up 0.3%, Shriram Finance is up 1.5%. अगर आप देखोगे सारे इवन द ऑटो काउंटर्स आर डूइंग वेल टुडे बारिंग टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, उसमें गाइडेंस कट हुआ था और वीक सेट ऑफ नंबर्स हैज लेड टू टाटा मोटर्स गोइंग डाउन अराउंड 4% टुडे. So Mahindra is up, Bajaj Auto is up, Titan is up. If we see metal counters are also relatively quiet with JSW Steel up around 0.3%. IT counters are also quiet today, but Eternal is up 1.3%, whereas Tech Mahindra is the best performing IT stock, that is up around 0.85%. FMCG names में भी आज selling pressure है. Hindustan Unilever is down 0.38%, ITC is down 0.38%. Pharma sector is also quiet today, 0.07%. Sun Pharma, Cipla is up 0.2%. So the only two sectors that are relatively supporting Nifty right now is your banking and financial services space and your auto space. ये दो सेक्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जिसकी वजह से हम निफ्टी में थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है. Now, talking about the key sectors to watch and the key stocks that are in focus, सबसे पहले सेक्टर की हम बात करें वो है आपका PSU बैंक. तो PSU बैंक, हम काफी टाइम से PSU बैंक को अभी ट्रैक करते आ रहे हैं. हम काफी स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक. ऑल दीज नेम्स हैव बीन डूइंग वेल सिंस क्वाइट सम टाइम. अगर आपको याद होगा, ऑलमोस्ट सितंबर एंड में ही हमने एक PSU बैंक में जब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइक ब्रेकआउट आया था रेशियो चार्ट पे, तब से हम लगातार PSU बैंक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. सो अगर हम देखेंगे PSU बैंक्स, अगेन आज एक फ्रेश ट्रैक्शन नजर आ रहा है. बट इफ यू लुक एट बैंक ऑफ इंडिया, सो बैंक ऑफ इंडिया अगेन हैज मेड अ न्यू हाई. इट्स एट 148.13 करंटली. हम देखते आ रहे हैं कि एक हायर हाई फॉर्मेशन से मूव होते हुए नजर आ रहा है. It is trading well above all its key moving averages. MACD का अगर आप स्लोप भी देखोगे, that is also pointing upwards, which is a positive sign. So any close above 148 is likely to be positive. On the downside, 140 to 143, that zone is likely to act as a strong support area for Bank of India. So any close above 148 can lead to Bank of India moving up higher. Aniji, I'll take your stock queries. So once I'll finish that, from 1 to 115 is when I'll take all the stock queries here. Now, if you look at Indian Bank, so Indian Bank is also one stock from the PSU space that is relatively doing well. So अगर हम नवंबर के स्टार्ट से ही हम देखते आ रहे थे कि एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था इंडियन बैंक. Though it was trading above all its key moving averages, so there was a clear lack of directional cues, or you can say a lack of volatility in this counter. और आज फिर से 2-3 दिन से नजर आ रहा है कि वॉल्यूम्स में एक पिकअप नजर आई है. आज प्राइस इज ऑल्सो अप अराउंड 2.5%. RSI has started to tilt upwards. अगर आप देखोगे, DI plus is going up, DI minus is going down, and the MACD histogram bars are kind of shrinking, which indicates that I think Indian Bank is likely to resume its upward journey. So around 850, 855 is likely to act as a strong support, while a strong close above 885
can lead to Indian bank moving up higher again. So that was about PSU banks. I think the next sector that I want to talk about is your private banking space. जैसे हमने देखा कि even private banks में एक strong traction नजर आ रहा है. तो अगर हम प्राइवेट बैंक्स बाय निफ्टी का रेशियो चार्ट देखें तो एक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं. I think Ganesh ji is saying no sound. Am I audible, guys? If you all can let me know in the chat box. क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? बिकॉज गणेश जी का कमेंट आया है कि नो साउंड. लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल, गाइस. आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करके बता सकते हो. Okay, Ravindran ji is saying yes. Siddharth ji is saying yes. So I'm assuming, okay, by all, no problem. Okay, Ganesh ji, maybe some issue at your end. Maybe आप एक बार check कर लेना आपके end से. So talking about private bank, so private bank by Nifty का ratio chart देखे तो वहाँ पे भी एक downward sloping trend line breakout मिला है हमें. तो प्राइवेट बैंक्स पीएसयू बैंक्स हम देखते आ रहे हैं कि काफी टाइम से पीएसयू बैंक्स एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और धीरे धीरे अब प्राइवेट बैंक्स में भी एक ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है. सो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो चांसेस है कि इवन प्राइवेट बैंक्स कैन आउट परफॉर्म निफ्टी probably in the coming trading sessions. One stock from the private banking space जिसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, that is IDFC First Bank. सुबह के सेशन में IDFC फर्स्ट बैंक काफी पॉजिटिव था बट हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया इंट्राडे बेसिस पे. बट अगर आप देखोगे अराउंड 82.5 83 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए. सो एनी क्लोज अबाउ 82.5 83 can lead to IDFC First Bank moving up higher, while on the downside around 79 is likely to act as a strong support area. वहाँ पे इसका 20-day EMA भी placed है stock का. So IDFC First Bank, keep an eye on that in the private banking space. Any breakout above 82.5 83 can be positive for this particular stock. Apart from that, one other stock from the private banking space, that is City Union Bank. अगर हम सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक ऑल्सो हैज बीन मूविंग अप स्टेडीली सिंस द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस. वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो उसमें एक बढ़ोतरी नजर आई है. RSI ऊपर की तरफ है, MACD स्लोप भी ऊपर की तरफ है, MACD बार्स राइजिंग है. बॉलिंजर बैंड्स देखें तो 2 दिन से लगातार ये बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड को हक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है. ये हम तब देखते हैं जब ट्रेंड्स एकदम स्ट्रॉन्ग होता है. उस टाइम में हमें ये नजर आता है कि जो प्राइस है वो अपर बैंड को हक करते हुए वो ऊपर की तरफ मूव होने लगता है. So City Union Bank is also very positive. So it needs to sustain about 265, 266. Right now it's at 277. So even City Union Bank is likely to continue its up move with around around 255, 260 acting as a strong support area for City Union Bank. Apart from that, oil and gas is also one particular sector that is doing well. आज एक बड़ा न्यूज भी आया था जहाँ पे ऑयल कंपनीज आर गोइंग टू इम्पोर्ट आई थिंक LPG फ्रॉम US. सो ऑलमोस्ट एक 10% एक्सपोजर होने वाला है US से. सो ऑल दी ऑयल कंपनीज आर रिलेटिवली डूइंग वेल. सो वन ऑफ दैट काउंटर दैट इज डूइंग वेल फ्रॉम दी ऑयल एंड गैस स्पेस इज BPCL. भले इंट्राडे हाइज से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है. But BPCL, the overall trend is positive. It trades above all the key moving averages. I think the momentum has just taken a pause. So any move above 380 on the upside can lead to continuation of up move towards 385, 390. While on the downside, 360, 365 is likely to act as a strong support area for BPCL. Apart from that, even like we discussed in Friday's session, डिफेंस काउंटर्स में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन नजर आ रहा है. आई थिंक लार्जली इट्स अ सेंटिमेंट ड्रिवन आप एक बोल सकते हो बिकॉज हाल ही में जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. सो हो सकता है देयर इज एन अनसर्टेनिटी गोइंग अराउंड दैट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ रिटेलिएशन like how we saw in the form of Operation Sindoor in the month of May. But again, there is no such news regarding the same.
But nevertheless, some even defense stocks have reported good set of quarterly numbers as well. So that also could have aided the sentiment for the defense space. But one stock that is looking strong from the defense space is MTAR Tech. सो अगर हम एमटार टेक की बात करें तो अगर हम देखेंगे 20 डे ईएमए को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे भी 13 अक्टूबर को एक करीब आया था 20 डे ईएमए का, वहां से एक अपमूव देखने को मिला। फिर हाल ही में 7 नवंबर को 20 डे ईएमए से एक बाउंस देखने को मिला है। पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है टाइट रेंज में। सो एनी मूव अबाउट 2680 कैन लीड टू प्राइस मूविंग अप हायर, while on the downside हम बोल सकते हैं 2500 2550 that is likely to act as a strong support for MTAR Tech. Apart from that, couple of other names that is doing well. One is Bharti Airtel, जो कि एक strong heavyweight stock है Nifty 50 index के लिए. So Bharti Airtel again has continued to move up higher. इसका previous high 2135 के आसपास था, अभी 2117 चल रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई राइजिंग मोड में है। अगर आप देखोगे एमएससीडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग ओवर द सिग्नल लाइन। the price is moving in a higher high higher low formation, and I think immediate resistance is around 2135. Any move about 2135 can lead to price moving up even higher. So Bharti Airtel ka trend is also very strong, with around 2075 2080 acting as a strong support for the stock. And the last stock that I want to discuss today is Siemens Limited. अगर हम Siemens की बात करें, so Siemens has given a downward sloping trendline breakout. हम देखते आ रहे थे कि प्रोग्रेसिवली एक लोअर लो लोअर आई फॉर्मेशन से मूव होते हुए नजर आया था, और आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। द स्टॉक इज अप नियरली 4.5%। 3 दिन से वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी मिली है। आरएसआई भी 60 के ऊपर है, एडीएक्स राइजिंग मोड पर है, एमएससीडी ने जस्ट सिग्नल लाइन के ऊपर एक क्रॉसओवर दिया हुआ है। सो ऑल इन ऑल द ट्रेंड लुक्स पॉजिटिव। आई थिंक सीमेंस अगर ये लेवल होल्ड करता है, then it can move towards 3,350 3,360 levels in the short term, with around 3,120 3,125 acting as a strong support for the stock. So PSU banks, private banks, oil and gas, Nifty India Defense, and infra, these are some of the sectors and some of the stocks that can likely do well in the coming sessions. So that's all from today's bid market session. I hope it was informative. And now let us start off with our question and answer session. So if you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box and I'll be happy to answer you all. Ganesh ji, very difficult to put a target. I feel, see, the intraday trend is positive, and I think more or less Nifty is likely to close above the 26,000 mark. It is just around 10 points away. I think any move about 26,000, I think it can move towards 26,040, 26,050 levels, with around 25,910, 25,950 acting as a strong support. I think एक tight support चाहिए तो that will be 25,960. Below that 25,920 is where the support is. So I feel Nifty can give a close about 26,000 and maybe move towards 26,040, 26,050. और the trend is positive. अभी तक फिलहाल के लिए कुछ ऐसा न्यूज फ्लो नहीं है जो ये इंडिकेट करेगा कि there is a reversal. There are no reversal signs here. Prashant ji is asking for JK Tire. JK Tire, if we look at the daily chart, see, the trend is positive. Is just that it is not able to sustain at the higher levels. But I feel once it goes above 476 480, I think it can continue its up move. 475 480 के बाद ये प्राइस ऊपर जा सकता है. So maybe you look for a fresh entry above this level, and with around 445 450 acting as a strong support. Harish ji, Tata Motors CV settled 27% higher. See, Tata Motors, very difficult because the passenger vehicle segment, again, it has reported weak set of numbers. That is largely due to the fact that ये जो cyber attack हुआ था, JLR division is not doing well. But I feel Tata Motors, if you are holding, especially if I'm talking about commercial vehicles, then maybe around 305 का SL रख के आप hold कर सकते हो.
If it goes below 305, then it's better to exit this counter. अंजलि मैम इज आस्किंग फॉर पीजीएल का एसएल पीजीएल थोड़ा सा एक रिकवरी साइंस नजर आ रहा है. मे बी यू कैन कीप इट 435 440 के आसपास. You can keep an SL for PGL. Suman ji is asking for IRB infra. See, IRB infra वेरी डिफिकल्ट. अभी बोल नहीं सकते कि एक ट्रेंड रिवर्सल है. ये आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला है. द स्टॉक इज 5% ऊपर है आज. सो अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोजीशन है तो मे बी अराउंड 43 के आसपास एक एसएल रख के आप होल्ड कर सकते हो. और अपसाइड मे बी 200 डे ये में अराउंड 47 के आसपास है. तो 47 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए टुवर्ड्स 50 लेवल्स. बट फिलहाल के लिए आप 43 का एसएल रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो. सी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year yields आई फील अभी भी अगर हम देखेंगे, आपको याद है हमने पिछले टाइम एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे देखा था. सो इवन दिस 10-year yields is almost at 6.5%. I think the yields can fall because market में consensus ये है कि RBI might go for a rate cut in the December meet. So जिसके वजह से I think the yields can fall to maybe 6. This is the lower level. It can fall to around 6.4, if not around 6.3 levels. But if RBI decides to keep the rates unchanged, or if there is any negative commentary, then I feel the immediate resistance is around the 6.6% mark. So any move above 6.6 can lead to yields moving up higher. But the consensus is that considering that inflation is well under control, I think it has come at 0.25%. So RBI should ideally go for a rate cut. That is what the market is also expecting. Market might factor in that. Any surprises that there can probably lead to yields going up towards 6.6%, while around 6.45% on the downside. That is a strong support area for the counter. E2E network. Okay, let me look at E2E network. सी राइट नाउ थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव हो गया है यहाँ पे मुकेश जी. ये 200 EMA के नीचे फॉल बैक कर लिया है. तो अगर ये फिर से ये 2770 2780 रिक्लेम करता है, फिर से 200 EMA के ऊपर जाता है, तो हो सकता है फिर से एक रिवर्सल साइंस नजर आए. बट फिलहाल क्योंकि 200 EMA के नीचे है तो थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है स्टॉक पे. I would say avoid any fresh entry now. Wait for the stock to close above 200 EMA again. Gurna ji is asking, sir, Jin Kushal Industries. Okay, let me look at Jin Kushal Industries. I think ये recently listed stock, if I'm not wrong. So I feel very ज़्यादा information नहीं है चार्ट पर. बट मे बी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो अगर हमें एक 125 128 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हमें जिन कुशल इंडस्ट्रीज में प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आए. ऑन दी डाउन साइड आई फील एक 110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप चल सकते हो. प्रमोद जी इज आस्किंग फॉर लेंसकार्ट. See, very difficult to say because I think Lenskart has recovered in the last 2 days. If you're already holding, then maybe around 390 का SL रख के आप hold करना, because very difficult to stay, very difficult to say if book profit करना चाहिए या long term के लिए रखना चाहिए. Because इतना significant data available नहीं है, because it's recently listed and considering that the valuations were relatively higher, तो थोड़ा डाइसी है बोलना. बट आई थिंक प्योरली गोइंग बाय द चार्ट्स, अगर आपके पास है तो आप 390 385 का एसएल रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो. ऊपर जाता है यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस so that you can ride the trend and take maximum advantage of the same. Santosh ji is asking for Masdog. Masdog is positive. I think it's almost on the verge of a trend line breakout. आज एक breakout दिया है, but I think ये 2800 के ऊपर strongly sustain होना चाहिए. I think once it is able to sustain about 2800, it can move towards 2870 2880 levels. Just look for the closing. आज candle is not relatively strong. एक doji candle बना है, एक strong bullish candle बनना चाहिए.
और 2800 के ऊपर एक strong closing चाहिए. I think once we get that, then chances are that it can move up higher. Yeah, Union Bank is good. The overall PSU space is doing well. Hanubhav ji, अगर हम Union Bank देखें, it's near its all-time highs of 159. I think any move above 159 is likely to be positive. ये और ऊपर जा सकता है because PSU Bank एक ऐसा sector है जो strongly outperform कर रहा है, and I feel even Union Bank can do well with around 150 acting as a strong support for the stock. See, gold bees you can consider, but I feel relatively more than gold, it's your silver bees that is outperforming Ram Mohanji, because if you look at gold by silver ratio chart, so we can see that right now gold is underperforming. So purely agar hum dekhenge, it's silver, so you can maybe look at silver bees for a short term period, though even though gold bees is rising up. But between gold and silver, it's silver that is outperforming here. So maybe you can hold your investments in gold for a bit. Albeit if you're doing SIPs, then you can definitely continue for a long term. But short term perspective, it's silver bees. Maybe if we look at silver bees currently, so maybe around 137 का SL रख के आप होल्ड कर सकते हो. But if you are really considering gold bees, see right now last 2 दिन से थोड़ा गिरा है, maybe above 105.3 105.5 is where you can consider, with around 99.5 to 100 acting as a support for gold bees here. IDBI Bank, IDBI बैंक पॉजिटिव है, मे बी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका 105.5 के लेवल पे. एनी मूव अबव 105.5 इज लाइकली टू बी पॉजिटिव. ये इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, विथ अराउंड 98 एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. SpiceJet, see, I feel I'm not very sure about SpiceJet because overall trend is still down. I feel as long as 41 is not taken out on the upside, it's better to avoid SpiceJet. Paradeep, Mukesh ji is asking for Paradeep Phosphates. You have bought at 175. So I feel keep a tight SL of 155, Mukesh ji, because अभी ये 200 डे EM है जो कि इसका की लॉन्ग टर्म एवरेज है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है. मे बी ये फिर से वो आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर आया तो ये आई थिंक इट कैन गेन ट्रैक्शन, बट एनी मूव बिलो 155 कैन लीड टू प्राइस फॉलिंग डाउन. सो 155 के नीचे आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट अगर 155 के नीचे जाता है तो इट्स बेटर टू एग्जिट. ग्रो, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू से. आई थिंक सी इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एट द एंड ऑफ द डे. So any company which has growing revenues, with the market participation increasing, with more investors coming into the markets, with more transactions happening, anyway it's going to benefit discount brokers. And I think Grow has had a phenomenal listing. I think if you are holding Grow, then it's better to keep trailing your stop loss. At some point of time, there will be some profit booking. I wouldn't be advisable to enter at these high levels because it's already up around 11% today. Wait for some correction, wait for some kind of profit booking, and then look for a reversal. I think the overall prospects from a long-term perspective is very good for this counter. Any scope for long-term contra bet on Tata Motors passenger vehicles? Very difficult, Rakesh ji, because see the guidance भी उन्होंने cut कर दिया है next year के लिए. JLR sales is not picking up. The domestic demand isn't sufficient enough नहीं है domestic demand. That is what I've been reading to offset the loss that is kind of seen in the JLR division. So very difficult to take a contra bet also at the current juncture. कुछ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइंस भी नहीं दिख रहे यहाँ पे. सो इट्स बेटर टू अवॉइड Tata Motors as a whole, whether it's your commercial vehicles or your passenger vehicles. I think we'll have to wait for a turnaround. We'll have to keep on tracking its quarterly results and look for some turnaround signals. I think a spark is what is needed for Tata Motors passenger vehicles. वो जब तक मिसिंग है तब तक ये शायद अंडरपरफॉर्म कर सकता है. PNB is good even from a long-term perspective. It's good. Like I said, the overall PSU space is doing well, and I think
PNB can move towards 130, 135 levels with around 120 acting as a strong support. Vinay ji, yeah, BSE is also good. BSE भी एक strong trend में है. You can continue to hold if you are holding with around 2720, 2730 acting as a support. Any sustained move can lead to BSE moving towards 2870 followed by 3060 levels from a slightly medium term perspective. Overall, a breakout के बाद, downward sloping breakout के बाद, it is moving in a higher high, higher low formation, and chances are that even BSE can move up higher. Okay, I'll just take one last query for the day. I'll take Piramal Finance. I think recently listed, so very difficult to form a view. But अगर आपके पास already है, तो maybe around I think post listing it has done really well. So around 1470, 1480 का SL रख के आप hold कर सकते हो. Even 1500 का SL रख के आप hold कर सकते हो. If you are already holding, avoid fresh entry because already the price has risen a lot. Maybe थोड़ा profit booking के बाद अगर कुछ reversal signs मिलता है, that is when you can probably consider again. But if you're already holding, then 1500 का SL रख के keep trailing your stop loss as and when the price goes up. Keep trailing your stop loss and hold on to your position your. Okay, so I guess that's all from today's mid-market session. I hope it was informative, and I hope you all are kind of finding value add to these sessions. Do share this link with your friends, families, and relatives. Because if you are finding value to these sessions, I'm sure even they can find value here. So more people can participate and more people can take advantage of these sessions, guys. So that's all from today's mid-market session. My colleague Gautam will be doing a webinar today evening at 4 o'clock. And tomorrow I'll meet you again for the mid-market session. और कल 4 बजे हम जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रैडल डिस्कस किया था 2 हफ्ते पहले, कल के सेशन में हम शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल डिस्कस करेंगे. और मैं फिर से आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर जो रिसेंटली लॉन्च फीचर है SBI सिक्योरिटीज ऐप में, उसका भी एक वॉक थ्रू आपको मैं दिखा दूंगा. So see you today at 4 o'clock. My colleague Gautam will be doing the session, and tomorrow I'll meet you at 12:30 for the mid market and at 4 o'clock for a session on short straddles and short strangles, which are neutral option strategies. Bye guys, take care, stay safe, and I'll see you all tomorrow. Take care guys.